Hello students, the question is select the correct statement from the following. Option are given 1, 2, 3 and 4, and in these options there are certain statements we have to check. So statement 1, statement A, Gauss law is true for any closed surface no matter what its shape or size. B statement, if the net electric flux through a closed surface is zero, we can conclude that the total charge contained in the closed surface is zero. Statement C, Gauss law is not based on the inverse square dependence on distance contained in the Coulomb law. Statement D, the electric field due to the charge outside the Gaussian surface contributes zero net flux through the surface. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, A only. Option 2, A and C only. Option 3, A, B and D only. And option 4, B, C and D only. So the problem is based on the topic electrostatics and in particular the Gauss law. So in this particular problem, we have to judge 4 statements whether they are correct or not. And according to them, we have to choose the different options 1, 2, 3 and 4. So Gauss law is true for any closed surface no matter what its shape or size. This is a true statement because the Gauss law or the Gaussian surface is random. We can take random. We can take a sphere. We can take any random object, any random shape. For example, we can take this kind of shape to enclose the charges. So we can say that this statement is correct. It is true for any closed surface, whatever be the size, whatever be the shape. So this statement is correct. If the net electric flux through the closed surface is zero, we can conclude that the total charge contained in the closed surface is zero. So this statement is also correct because if the total net charge is zero, the net sum is zero, either the charge is absent or if present, then in that case the net sum of the charge is zero. Then in that case the net electric flux is zero. So this is also a true statement. C, Gauss law is not based on the inverse square dependence on the distance contained in the Coulomb's law. This is a false statement because it depends upon the inverse square dependence which is contained in the Coulomb's law. Inverse square dependence on distance which is contained in the Coulomb's law. So this is a false statement because it is based on the inverse square dependency. So this is a false statement. The electric field due to the charge outside the Gaussian surface contributes zero net flux through the surface. Suppose there are some charges which are outside the Gaussian surface, then in that case the electric field due to these charges, they contribute zero flux. The only charges that contributes the flux are the charges those which are inside the Gaussian surface. So this statement is also correct statement. So A, B and D, these are the correct statements. So from this analysis we can say that option 3 is correct, A, B and D only. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पर्टिकुलरली टॉपिक गॉसियन सरफेस से. इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं उनमें सही हैं. तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है गॉस लॉ ट्रू है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. गॉसियन लॉ या गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कोई भी एक डेफिनेट शेप या साइज की जरूरत नहीं होती, कोई भी एक रैंडम शेप चूज की जा सकती है गॉसियन सरफेस. दूसरा कहा गया है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो, वी कैन कंक्लूड दैट द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द क्लोज सरफेस इज जीरो. अगर हमने क्लोज सरफेस को एक ले लिया, पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस चूज कर लिया, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज है, तो अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा. अगर नेट फ्लक्स जीरो है इसका मतलब नेट चार्ज भी जीरो होगा. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि गॉस लॉ नहीं है बेस्ड इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस, जो कि कूलम्स लॉ में है. तो कूलम्स लॉ की इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे ही गॉस लॉ बेस्ड है. तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. डी स्टेटमेंट में कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू द चार्ज आउटसाइड, जो आउटसाइड चार्ज हैं, गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं, तो वो जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे वो फ्लक्स काउंट नहीं होगा. अगर हम यहाँ वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे नेट फ्लक्स कैलकुलेशंस में, केवल वही चार्ज जो है कंट्रीब्यूट करेंगे जो इनसाइड द गॉसियन सरफेस हैं, वही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगे.
सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए, बी और डी ये 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही माना जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।